हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में हम जो अभी रिसेंटली 2 जुलाई को एग्जाम हुआ है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन हार्ट? 4 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड और 5 चैम्बर्ड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज 4 चैम्बर्ड, जिसमें हमें पता है कि हमारे 2 एट्रियम होते हैं राइट एंड लेफ्ट एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, ए पेशेंट इज इन 4th स्टेज ऑफ लेबर, विच असेसमेंट द नर्स शुड मेक? फर्स्ट था फीटल हार्ट रेट, फीटल पोजीशन एंड स्टेशन। सेकंड था डायलिटेशन, अपेसमेंट एंड स्टेशन। थर्ड था फंडल लोकेशन, लोकिया एंड पेरिनियम। और फोर्थ था प्लासेंटल सेपरेशन, फंडल लोकेशन एंड यूट्राइन टोन। तो अगर हम ये देखते हैं तो इसमें जो हमारी 4th स्टेज होती है बेसिकली वो हमारी ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। तो जिसमें हम बेसिकली जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, जिसमें हम फंडल लोकेशन देखते हैं, लोकिया देखते हैं और पेरिनियम देखते हैं फॉर एनी साइन ऑफ पेरिनियम टीयर। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो था, एन 18 month old child has intermittent vomiting. What should the mother be instructed about the position of the child during sleep time? Supine position, prone with head elevated, prone with face turned to the side और sideline position. 18 महीने का बच्चा है, उसको इंटरमिटेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो हम मदर को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमने बच्चे को किस पोजीशन में सुलाना है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइड लाइन पोजिशन। क्यों? ताकि अगर बच्चा सोते सोते भी अगर उसको वॉमिटिंग होने लगती है तो उसमें जो एस्पिरेशन के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए डॉक्टर ऑर्डर एन आईवी टू इन्फ्यूज एट 35 ml per hour. A pediatric microdrip chamber is hanging. How many drop per minute should the nurse regulate the IV to infuse? And the options are 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10 and 35. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें पता है कि 35 ml पर आवरली हमने फ्लूइड देना है और हमारे पास जो पीडियाट्रिक ड्रिप है वो क्या, जो पीडियाट्रिक ड्रिप है उसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो हमें पता है कि 60 होता है और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 जो है वो माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 30 ml बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 35 ml। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस suddenly complain of chest pain aggravated by breathing and shortness of breath and is visibly diaphoretic and anxious. These signs and symptoms are of myocardial infarction, pneumonia, pulmonary edema और pulmonary embolism। तो हमें पता है कि अगर पेशेंट को सडन चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो वो किस चीज के सिम्टम है? दैट इज ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन टाइज पीपल टू देयर सराउंडिंग, सोशल सराउंडिंग, फिजिकल सराउंडिंग, materialistic surrounding and environmental surrounding. So we all know कि communication जो है it is a part of social surrounding. जब हम अपने किसी से हमने communicate करना होता है तो that will donate our social relationship. So basically communication is all about our social surroundings. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज, इन असेसिंग अ वुमेन्स रीजन फॉर सस्पेक्टिंग शी मे बी 3 months pregnant, the most relevant question for the nurse to ask would be, are you currently taking oral contraceptives? When was your last menstrual period? How much weight have you gained or have you been pregnant before? तो एक फीमेल है, उसको लगता है कि वो पिछले 3 months से प्रेग्नेंट है, तो इनमें से कौन सा जो रेलेवेंट क्वेश्चन है एक नर्स जो है उसको पूछेगी? तो वो हमें पता है कि she will ask about her last menstrual period, जिसको last time period कब आए थे। तो this will be the relevant question that a nurse will ask from a female who is suspecting that she is pregnant. Now the next question is, which of the following is correct about explaining dyspnea? Increased rate and depth of respiration, increased awareness of respiratory effort, decreased alveolar ventilation, or the D1 is decreased oxygen saturation of the venous blood.
सो वी ऑल नो दैट डिज्नी हैज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड इसमें क्या है कि वहां पे हमारा जो रेट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन डेप्थ जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, बट समवेयर देयर इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेटरी एफर्ट, हमें ज्यादा एफर्ट्स के साथ ब्रीथ करना होता है। जिसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, that is increased awareness of respiratory effort. Next question था, antidiuretic hormone acts on glomerulus, renal tubules, both A and B and none of the above. So जो हमारा ADH हार्मोन है बेसिकली ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2-year-old child with the diagnosis of bacterial meningitis, which of the following sign or symptom of the meningeal irritation should be observed? So इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज कर्निक साइन। वी ऑल नो कि मेनिंजाइटिस में हमारे टू मेन साइंस होते हैं, दैट इज ब्रुजेल्स्की साइन एंड कर्निक साइन, तो इसमें ब्रुजेल्स्की साइन नहीं है, सो द राइट आंसर विल बी द कर्निक साइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are goals of vaccination? So the options are prevent infection, prevent disease, prevent transmission or all of the above. So जो goal होता है हमारा बेसिकली वैक्सीनेशन का वो ऑल ऑफ द अबव है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, डिजीज को प्रिवेंट करना है और डिजीज ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि which information will be accurate for umbilical cord care, and the options are separation of umbilical cord usually happen within first 2 weeks of life, a sterile dressing is recommended for umbilical stump, applying antibiotic ointment several times a day helps the umbilical cord to separate, it is necessary to apply betadine solution to the umbilical stump after each diaper change. So हमें पता है कि आजकल जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है कि हमने हमारे अम्बिलिकल स्टम्प के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कोई बीटाडिन नहीं, कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट नहीं, कोई ड्रेसिंग नहीं, सो सिंपली हम उसको एयर में ओपन छोड़ देते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द स्कोर ऑन ग्लास्कोकोमा scale in a child who cries, withdraws from painful stimuli and opens the eye to the pain. तो इसमें जो हमारा pediatric glaucoma scale है, according to that जो इसमें राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका जो जब हम सबको एड ऑन करेंगे तो इट विल लीड टू 9 स्कोर। Then the next is, a colostomy begins to function 2 to 3 days post-operatively, 1 week post-operatively, 2 weeks post-operatively, or immediately. So the right time for colostomy function is after 2 to 3 days of the operation. मतलब कि 2 से 3 दिन के बाद जो है वो colostomy जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट करती है। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, while suctioning a patient through an endotracheal tube, the cardiac irregularities on the cardiac monitor appear. Which would be the most appropriate action? Ensure that the suction to be limited to 15 seconds. Stop the procedure and reoxygenate the patient. Notify the physician immediately or continue to suction. This may be right answer, that is option number B. Let's stop the procedure immediately and reoxygenate the patient. The next question is, the nurse prepared to administer mepridine intramuscularly to an adult patient by selecting which of the following gauze needle. The options are 16, 18, 23, and 26 gauze. So the right answer will be the 23 gauze, because this is the right gauze that we basically use for the adult patient while we are administering the intramuscular injection. So 23 gauze will be the right answer. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, the nurse knows that the function of gallbladder is to synthesize and manufacture bile, collect, concentrate and store bile, collect and dilute bile, regulate bile flow into the duodenum. So the right answer will be the option number B, that is collect, concentrate and store bile, क्योंकि जो bile है वो liver produce करता है, gallbladder उसको store करता है और concentrate करता है। Next the question is, most reliable method of measuring body temperature is oral, axillary, rectal or elbow. So we all know that the most reliable method is rectal method. So इसमें जो हमारा option number C है that is the right answer.
Next question is immunity means disease resistance capacity, disease producing capacity, treatment of disease or none. तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी. इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी कैसे एक डिजीज को रेजिस्टेंट कर सकती है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following which order of movement occur during labor? So engagement, flexion, internal rotation or descent, engagement, internal rotation, restitution or crowning, engagement, descent, flexion, internal rotation, engagement, restitution, flexion और internal rotation. The right answer is option number C. सबसे पहले engagement होती है, descent होता है, flexion होता है and then internal rotation होता है. Then the next is which of these observations would be considered characteristic of a newborn, normal newborn. So the options are random jerky, uneven movements of eyes, a high-pitched shrill cry, bulging fontanelle, or a lethargic posture during the bath. So for a normal newborn, the right answer will be the option number A. That is random jerky, uneven movement of the eyes. Now the next question is the biggest single determinant of HIV transmission to the infant is mother's age, mother's viral load, mother's immune status or infant CD4 cell. So इसमें जो mother's viral load है that will be the biggest single determinant of HIV transmission. तो जितना ज्यादा viral load होगा उतना ज्यादा ही chances है HIV transmission के. Now the next question is an appropriate goal for a patient with anxiety would be to ventilate your feeling to the nurse, establish contact with reality, learn self-help technique for reducing anxiety, or become desensitized to past trauma. So to reduce the anxiety of a person, the main goal will be that learn self-help technique for reducing anxiety. Now the next is a patient is experiencing a high level of occupational stress and a history of migraine headache. Which nursing diagnosis take priority? Anxiety, activity intolerance, ineffective role performance और pain. So इसमें जो है प्रायोरिटी पूछी है, ये चारों उसमें डायग्नोसिस बनेंगे बट इन चारों में से प्रायोरिटी कौन सी है? So that will be the anxiety. Now the next question is the best way to prevent a transfusion reaction when administering packed RBC to a patient is to run the blood slowly for the first 15 minutes, verify the patient unit and donor number, type of the blood product and expiry date before handing the blood, use white tubing to administer the blood and monitor vital signs frequently while blood is infusing. So इसमें है कि हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट वे क्या है. इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले ये सारी चीजें जो है वो चेक करनी है. वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारा जो है यूनिट है, डोनर नंबर है, दैट इज मैच्ड. जो टाइप ऑफ ब्लड हमने प्रोडक्ट देना है वो अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप ऑफ पेशेंट होना चाहिए. Then the next is which of the following is the priority for the nurses to monitor in a child who has hypospadiasis surgery? And the options are urethral fistula, urinary tract infection, dysuria और bladder spasm. So अगर हम hypospadiasis की सर्जरी देखते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज यूरेथ्रल फिस्टुला. तो बच्चे को हमने यूरेथ्रल फिस्टुला के लिए चेक करना है, मॉनिटर करना है. नाउ द नेक्स्ट इज if bile flow into the duodenum is obstructed, absorption of fat soluble vitamin is reduced. So which complication would the nurse therefore observe? So the options are peripheral neuritis, scurvy, microcytic anemia or increased bleeding tendencies. So the right answer will be the option number C, that is increased bleeding tendencies will be there. Now the next is बिकॉज अगर हम देखते हैं ये पेरिफेरल न्यूराइटिस, स्कर्वी और माइक्रोसिटिक एनीमिया ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होते हैं. बेसिकली ये जो है दे आर द वाटर सॉल्युबल और इसमें क्या है फैट सॉल्युबल की बात की है तो दैट विल बी इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसीज. नाउ द नेक्स्ट इज the nurse can increase the
Ventilatory efficiency of patient with COPD by positioning the patient as follows: high followers, prone position, sitting up and leaning slightly forward or candle-verse position. So we all know कि COPD position में हम patient को tripod position के लिए बोलते हैं, and tripod position क्या है? That is option number C, that is sitting up and leaning slightly forward. Now the next is a nursing student while providing health education to a patient tells the primary purpose of pursed lip breathing is to promote oxygenation, promote oxygen intake, strengthen the diaphragm, strengthen the intercostal muscle and promote carbon dioxide elimination. So इसमें जो हमारा right answer रहेगा that will be option number D, that is promote carbon dioxide elimination. अगर हम COPD वाले पेशेंट को pursed lip breathing के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि उसमें जो भी हमारी जो CO2 है वो बॉडी के अंदर रिटेंशन ना रहे उसके, वो ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट हो. Now the next is the patient ordered stat tablet glimepiride 500 mcg daily. On the on hand, the nurse has glimepiride 2.5 mg tablet. How many tablets will the nurse administer? 1 tablet, 2.5, 0.2 और 2 tablet. So पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो mg में है और जो हमारे पास डॉक्टर ने ऑर्डर की है दैट इज इन mcg माइक्रोग्राम. तो पहले तो हमने इनकी यूनिट्स को सेम करना है. तो वी विल कन्वर्ट दिस 500 mcg into mg, so that will lead to 5 mg. 500 mcg is 5 mg. So हमारे पास कितनी है? 2.5 है, तो 2.5 is लीड टू 5 mg. तो हम 2.5 की पेशेंट को 2 टैबलेट दें. Now the next is which of the following drug is questionable for use in a patient who had glaucoma, and the options are acetazolamide, pilocarpine, atropine और mannitol. So ये अगर हम सारे देखते हैं, mannitol हमारा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, acetazolamide और pilocarpine ये हम दोनों ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, whereas atropine is contraindicated in glaucoma. So this will be questionable if any doctor prescribe this drug to a patient who is having a glaucoma. Now the next is the determining factor in the revision of the nursing care plan is the time available for the care, validity of diagnosis, method for providing care and effectiveness of the intervention. So हम हमारे nursing care plan को तभी revise करते हैं on the basis of the effectiveness of the intervention. अगर हमारी interventions effective नहीं है तो हम फिर से new nursing care plan बनाते हैं. So option number D will be the right answer. इसके बाद हमारा next है a patient has above knee amputation on the left side. While being repositioned onto the abdomen, the patient cannot turn because the left foot is causing too much pain. The first response by the nurse would be to insist the patient lie on the abdomen, to overlook the statement of the patient and state that the nurse will return later, to discuss the principle of phantom pain after amputation, and to offer some form of pain control. So basically left हमारा knee जो है above knee amputation हुई है लेफ्ट साइड की और पेशेंट लेफ्ट साइड पे ही पेन बोल रहा है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज फैंटम पेन. तो इसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा दैट इज टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फैंटम पेन आफ्टर एम्पुटेशन. नाउ द नेक्स्ट इज the science that study the distribution, occurrence and control of health and disease in a defined population is called epidemiology. ये हम सबको पता है. Then the next is mumps affect maxillary gland, parotid gland, gastric gland और interstitial gland. तो mumps जो है वो हमारे salivary gland को affect करते हैं. अब salivary gland में से भी कौन से gland को affect करते हैं? That is parotid gland. So mumps जो है वो parotid glands को affect करते हैं. Now the next is the National Agency for Developing and Carrying Out Disease Prevention and Control is called the Department of Homeland Security, National Institute of Health, Center for Disease Control and Prevention and World Health Organization. So जो हमारी Center for Disease Control and Prevention है, that is the national agency that will develop and carry out the disease prevention and control. So this one CDC भी बोलते हैं. So an increase in disease occurrence within a large population over a very wide region is called an outbreak, an epidemic, an pandemic or a sporadic. So large population पे बोल रहे हैं, worldwide बोल रहे हैं, so that will be the pandemic.
जब भी कोई भी डिजीज किसी लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है जैसे कोविड-19, तो दैट इज नोन एज पैंडेमिक. Now the next is the science of the protecting population and improving the health of human communities through education is called epidemiology, public health, preventive medicine, or sociology. So that is known as preventive health. So option number B is the right answer. Now the next is in which type of cell division chromosome number remain the same? So the options are मिटोसिस, प्रोफेस, मियोसिस और हेलोफेस. तो जो मियोसिस माइटोसिस है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो सेम रहते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. इसके बाद नेक्स्ट है ए पेशेंट with no history of cardiovascular disease suddenly complain of chest pain. Which of the following data from the patient would help the nurse to discriminate the pain due to non-cardiac problem? So rating scale on a pain of 1 to 10 with 10 being the first, previous history of chest pain, intensity of the pain, or worsening of the pain with inspiration. So worsening of pain will be the right answer. That will help the nurse to discriminate between the pain due to non-cardiac problem. Now next is which of the following does bacteria need to assist grow and multiply? Water, food, warm temperature. So all of the above is the right answer. हमारा जो बैक्टीरिया है वो वाटर में, फूड में, वार्म टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है. Now the next is nursing preparation for a gastroscopy procedure include holding the patient NPO for 24 hours before the procedure, having an operative or procedure consent form signed, reassuring the patient that gastroscopy is not an uncomfortable procedure, though he or she will need to lie quietly, remove dentures and administering pain medication before the procedure. So इसमें जो gastroscopy है, gastroscopy is just a visualization of the stomach. तो इसमें जो सबसे important nursing responsibility है, that is having a signed consent form from the patient. Now the next is a physician order 1 liter dextrose, 5% and half saline solution to infuse at 125 ml per hour. So the drip factor of the available IV tubing is 15 drops per ml. So what will be the drop factor? So इसमें जो हमारा रहेगा कि हमारा in this the right answer is option number A, that is 31 drops per minute. तो हमने इसमें 1 लीटर हमारे पास है जो कि हमने पेशेंट को देना है. ठीक, एंड कितने अमाउंट पे देना है? 125 ml पर आवर. एंड जो इन्होंने ड्रिप फैक्टर दिया है दैट इज 15 ड्रॉप्स per minute per ml. So by using the formula, that is we can calculate this. तो इसमें जो इन्होंने आंसर की दी है according to that the right answer is 31. Now the next is the nurse notes decrease in fetal heart rate that coincide with patient's contraction. What term will be used to document this finding? So the options are late declaration, early declaration, recent or presentation. So that will donate the early declaration. So option number B is the right answer. Now the next is diabetes insipidus occur due to the deficiency of. The options are growth hormone, insulin, ADH or thyroxine. So option number C is the right answer. Diabetes insipidus is occurred due to the deficiency of antidiuretic hormone, which is also known as vasopressin and which is secreted by the posterior pituitary gland. Now the next is catgut is synthetic absorbable suture, synthetic non-absorbable suture, natural absorbable suture और natural non-absorbable suture. So catgut जो है हमारा natural absorbable suture है. Now the next is iron deficiency anemia is best described as hypochromic microcytic, hyperchromic macrocytic, hyperchromic microcytic or hypochromic macrocytic. So right answer is hypochromic microcytic जो है that is the best means best way to describe the iron deficiency anemia. Now the next is in community a person complained of severe indigestion while walking in the hall.
grabs his chest and fall to the floor. The first assessment to make would be to determine the unresponsiveness, breathing pattern, blood pressure और presence of the pulse. तो सबसे पहले हम जब भी CPR देने से पहले हम क्या चेक करते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, कि पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं. अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो हम CPR स्टार्ट कर देते हैं. जिसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. Then the next is enzymes are which of the following? Enzymes are protein, lipids, carbohydrates, or all of the above. So basically enzymes are the proteins. So option number A is the right answer. Now the next is which one of the following are multinucleated? Involuntary muscles, cardiac muscles, or none of the above. So जो हमारे voluntary muscles होते हैं, they are the multinucleated, that are the striated muscles. जिनको हम बोलते हैं वो हमारे multinucleated muscles होते हैं. इसके बाद हमारा next question है the prevalence of disease depends upon, and the options are the incidence rate, duration of the illness, both the incidence rate and the duration of the illness, neither the incidence rate nor the duration of the illness. So it is option number C is the right answer. So basically prevalence होता है हमारा all the number of cases, either new cases or the old cases. नए भी और पुराने भी दोनों मिलके prevalence बनाते हैं. लेकिन जो हमारा incidence rate होता है उसमें सिर्फ हमारे new cases आते हैं. Now the next is the primary function of citric acid cycle is to facilitate aerobic cellular energy production, oxidize cellular toxins, produce anaerobic energy by fermentation, or synthesize vitamin D. तो citric acid cycle का जो main function होता है वो होता है energy production. So facilitate aerobic cellular energy production. Now the next is infectious disease that can be transmitted from person to person, known as, so वो हम सबको पता है, that is known as communicable disease. Now the next is nosocomial infection are usually caused by fungi, protists, bacteria, or virus. So the right answer is bacteria. So the infection resulting from pathogen acquired by patient while in the hospital or nursing facility are known as, तो हमें पता है अगर एडमिशन के बाद अगर विद इन 72 आवर्स पेशेंट को कोई इंफेक्शन हो रही है तो दैट इज नोन एज नोसोकोमियल इंफेक्शन. Now the next is which of the following cell organelle is absent in animal cell and present in a plant cell? So cytoplasm, cell wall, vacuoles, or none of the above. So right answer is cell wall. The cell wall है that is absent in animal cell, whereas it is present in plant cell. Now the next is which of the following practices limit the spread of nosocomial infection? तो ये हम सबको पता है कि the best way to prevent any kind of infection in the hospital setting is hand washing. So hand washing the practice है that will prevent the spread of nosocomial infection. Now the next is which part of the neuron receive information, and the options are axon, myelin sheath, dendrites or node of ganglion. तो राइट आंसर इज द डेंड्राइट्स. जो डेंड्राइट्स होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन को है रिसीव करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर अनस्टेबल एंजाइना द नर्स एडमिनिस्टर अ बीटा ब्लॉकर बिकॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, एंड द ऑप्शंस आर टू डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोरोनरी आर्टरी vasodilation, to promote cardiovascular fluid shift, or to decrease the heart rate. तो बेसिकली यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर्स का काम रहेगा वो रहेगा हार्ट रेट को डिक्रीज करना. Now the next question is a newly admitted patient is diagnosed with post-traumatic stress disorder. Which behavioral symptom would the nurse expect to assess? And the options are detachment or estrangement from others, intense fear, helplessness and horror, diminished participation in significant activities, and recurrent distressing flashback. So इसमें जो behavioral symptom रहेगा that will be the diminished participation in significant activities. जो patient रहेगा वो activities में participate नहीं करेगा. Now the next is the key factor responsible for rise in drug resistant pathogen is use of synthetic antibiotics, excessive or inappropriate use of antimicrobial therapy,
जर्नल डिक्लाइन इन सैनिटेशन और ऑल ऑफ द अदर। सो बेसिकली जो ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन है दैट इज ड्यू टू द एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। अगर हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या जितने टाइम पीरियड के लिए हमें दी गई है उससे हम कम यूज कर रहे हैं तो दैट कैन कॉज ड्रग रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट इज a patient diagnosed with schizophrenia is experiencing anhedonia. Which nursing diagnosis address concerns regarding this patient's problem? Disturbed sensory perception, disturbed thought process, risk for suicide, or impaired verbal communication. So the right answer is risk for suicide, because anhedonia क्या है? कि the person will not getting that pleasure in doing the activities जो उसको पहले मिलती थी। अगर उसे पहले फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलने से खुशी मिलती थी तो अगर वो अभी क्रिकेट खेल रहा है तो उसको वो प्लेजर वो खुशी नहीं मिल रही है, तो दैट इज नोन एज एनिडोनिया। सो इसमें जो कंसर्न रहेगा दैट विल बी द रिस्क फॉर सुसाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोग्लाइसीमिया इन द न्यूबॉर्न और डायबिटिक मदर इज रिलेटेड टू reduced glycogen reserve, disruption of fetal glucose supply, maternal insulin dependency, or pancreatic insufficiency. So the right answer will be the disruption of fetal glucose supply. Now the next is, to which patient administering lithium and anti-manic medication is questionable? A 30-year-old patient with urine output of 40 ml per hour, a 23-year-old patient taking antidepressant medication, a 42-year-old patient taking a loop diuretic, and the 54-year-old patient on a 4 gram sodium diet. So इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द पेशेंट हु इज ऑन लूप डाइयूरेटिक। उनमें जो लिथियम अगर उस पर्सन को मिल रहा है तो उसमें लूप डाइयूरेटिक अगर पेशेंट को मिल रहा है और साथ में लिथियम मिल रहा है दैट विल बी क्वेश्चनेबल। सो इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी की क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।